Bismillah Rahman Rahim. This is lecture number 45th. The name of the paper is Literary Criticism 1. The name of the book is On the Sublime by Longinus. The topic is Longinus as a classic. In the previous lecture, we discussed Longinus as a romantic, and now we are discussing him as a classic. He is both. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PIB, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In the previous lecture, as you know, we discussed Longinus as a romantic, and we proved that he is a romantic, especially referring to Scott James. He gave different reasons for his being a romantic. Atkins does not agree with Scott James, and Atkins believes that Longinus was a classic. But the problem is what is meant by classic? What are the characteristics of a person who can be called a classic? Uh, Atkins differs with Scott James, and he calls Longinus as a true classic. He has written a book. The name of the book is History of Literary Criticism, and in this book, he calls Longinus as a true classic, and therefore he does not agree with the reasons given by Scott James. According to Atkins, the main problem is the equating of classicism with new classicism. We have discussed this topic, new classicism, before, and we have said that new classicism is actually false classicism. The new classic poets and writers, for example, Pope and Johnson and many others, mainly when people say classicism or classics, the people which come into the mind are Pope and Johnson. The problem is that they were not real classics, they were new classicists. And new classicists uh, could be referred to as a false classic or fake classic. They were not real classics because they followed only the garment and not the not something which is inside it. That is, the spirit was left and the outside was only taken. Diction was great, meter was well done, but the spirit of the classics was lacking in them, and spirit is the main item. According to Atkins, the problem is that people think that classic or classicism means new classicism, and this is a kind of misbelief because Pope Johnson and others, they were new classicists and a kind of pseudo classics, and they were not real classicists. So calling the new classicists as classic writers is the problem, according to Atkins. In classical poetry, in actual classical poetry, imagination and passions did play an important role. In the poetry and the works of the new classicists, imagination and passions were not considered good, and they thought that imagination takes you away from reality, and so are the passions, and they should not be followed. The exact opposite is that of classical poetry. So, therefore, calling the new classicists as classic writers is the problem. According to Atkins, this is the problem because the new classicists, they did not give importance to imagination passions. The real classical poetry had imagination passions as the most important ingredient, and these were excluded from the neoclassical poetry. Neoclassical poetry mainly was based on reason and common sense, and the things they disbelieved in were imagination and passions.
So reason was important for them, brain was important, but heart was not. Brain, which is the seat of reason, and heart, which is the seat of passions and imagination, it was ignored by them. Classicism, as we know, believed that keeping passions under control is important, but passions are not allowed to create chaos. I mean, classicism uh, had passions in them, the classical writers. There was the use of imagination, there was the use of passions, but passions were kept under control in classicism. So, saying that classicism does not have passions is wrong. This would be the correct idea to say that in classicism, passions were kept under control, and this is something good. Keeping the passions under control so that they would not create chaos is something good. And this controlling of passions is important. So, which means that passions were there, imagination was there. Classicists also believed in restraint, in controlling passions, in a restraint. Without restraint, they thought there would be no beauty, no harmony, and no balance. And that is the correct idea. Because if you let the imagination loose, the passions loose, the beauty will be destroyed, harmony, balance will no more be there. Classicists did not manage passions and emotions, imagination. They only tried to control them, to give restraint. Now, coming to Longinus, we know that Longinus emphasizes balance, which is a classical quality. Balance in his um, important book, as we have been discussing on the sublime, sublimity. In this book, he is in favor of balancing the two qualities. For example, he uses the idea of spur and curb. He says that spur is necessary, which is equivalent to imagination and passions. That is, imagination and passions act as a spur. He is taking the image of horse racing. Spur makes the horse run quickly, and the same is the case with imagination and passions. They spur the poet, but he says that with the spur there should be curb, which is also necessary, and spur refers to the control and the restraint to create balance. So there should be a balance between the spur and the curb. If there is no curb, then the spur will make the imagination run wild. So there should be a curb also involved. This is that balance towards which Longinus refers. Longinus actually stands for this restraint. Uh, he has this restraint, and he has discussed this restraint in his On the Sublime, and therefore he is a classic. You know, and we have already discussed this, that Longinus has talked about nature and art. Nature is something which is given to us, to the poets. They are God given, and that ability, natural ability, cannot come with your practice or with your hard work. That comes naturally to you, that is God given. But then there is art. Art is something which is acquired. So therefore he talks about both of them. He says, well, nature is important, perhaps more important than art, but he does not ignore art, and he says that art and learning, they should not be ignored. He wants a balance between these two, and balance is the quality of classic writers. So therefore Longinus is also a classic. According to Longinus, sublimity is not only the product of art, but it is the product of both art and nature. Nature plays more important role than art, but nature and art combined together will make and create sublimity.
So this is the first argument. Longinus is a classic because he talks about restraint, he talks about the spur, but he also talks about the curb. He wants a balance between the nature and the art. The second argument is that of imitation. We know this word imitation was slavishly used by the neoclassicists. They believed that slavishly copying the classical writers will make you a sublime writer. Longinus stresses the imitation of classical writers like Sophocles, Homer, etc., um, because these are Longinus's ideal writers. But that imitation is not the imitation of the neoclassical type of imitation, because this is the imitation of spirit. It is not the imitation of outer form, as was believed by the neoclassical writers. They believed in the imitation of the outer form, not in the spirit. So, this difference is not the difference of classicists and romantics. When we say that imitation of spirit is important according to Longinus, and the imitation of outer form is important for neoclassical writers, then this difference is not the difference of classicists and romantics. This is the difference of classical and neoclassical. So this is the problem. Longinus wants us to have the qualities of Homer as an epic writer and the qualities of Sophocles as a dramatist, as a dramatic writer, and this is to revive the spirit of classicism. This is not the imitation, which is a kind of slavish imitation. This is actually imbibing it. He uses the word imbibing the spirit, and we have discussed what is meant by imbibing the spirit. That is the spirit which is imitated, not actually the outer form which is imitated. Atkins therefore concludes that Longinus is a true classic. He is neither a neoclassicist nor a romantic, according to him. But we conclude that yes, he is both. uh, we cannot call him only romantic, but we cannot call him only classic. Therefore, we cannot call him romantic to the exclusion of being a classic. He is both. And he is both romantic and classic. He combines what is best in romanticism and classicism. And best of these two, when combined together, creates great poets and great writers. For a great poet, imagination and passions are important, grand conception is important, and these are romantic qualities. But Longinus also emphasizes restraints, balance, and therefore these qualities, balance and restraint, make him a classic. So our conclusion is that he is romantic as well as classic. ये हमने जो डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लॉन्जाइनस को रोमांटिक के तौर पे। तो हाँ, वो उसमें रोमांटिक क्वालिटीज़ भी हैं और क्लासिक क्वालिटीज़ भी हैं। एटकिंस स्कॉट्स जेम्स के साथ एग्री नहीं करता, और एटकिंस के मुताबिक लॉन्जाइनस एक क्लासिक राइटर है, और ये भी वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बताता है। एटकिंस के मुताबिक असल में मसला ये है कि हम क्लासिसिज्म को न्यू क्लासिसिज्म के साथ इक्वेट करते हैं, मुसावी समझते हैं। ये दोनों बिल्कुल मुसावी नहीं है, क्योंकि जब हम क्लासिसिज्म की बात करते हैं तो ज़हन में पोप और जॉनसन्स आते हैं। पोप और जॉनसन्स ये न्यू क्लासिसिस्ट तो हैं, लेकिन ये क्लासिकल राइटर्स नहीं हैं। इनको सूडो क्लासिकल, फॉल्स क्लासिक राइटर्स कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आउटर फॉर्म को कॉपी किया और जो स्पिरिट है उसको कॉपी नहीं किया। क्लासिकल पोइट्री में इमेजिनेशन और पैशंस ज़रूर अहम किरदार अदा करते हैं, और ये दोनों चीज़ें न्यू क्लासिकल पोइट्री में नहीं है। न्यू क्लासिकल पोइट्री रीजन और कॉमन सेंस पे बिलीव करती है, और क्लासिसिज्म जो है ये पैशंस इसमें मौजूद है, इमेजिनेशन मौजूद है, लेकिन पैशंस और इमेजिनेशन ये अंडर कंट्रोल हों ताकि ये गड़बड़ पैदा ना करें, और ये बात बुरी नहीं है, और ये क्लासिसिज्म की बेस्ट क्वालिटी है।
जो रोमांटिसिज्म की बेस्ट क्वालिटीज है वो भी लॉन्जाइनस में मौजूद है। तो क्लासिसिस्ट जो है इन इनका बिलीफ रिस्ट्रेंट और कंट्रोल पर था। अगर कंट्रोल ना हो तो आपकी इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाएगी, ब्यूटी खत्म हो जाएगी, हार्मनी और बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो क्लासिसिस्ट ने पेशेंस इमेजिनेशन को बिल्कुल बैनिश नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, इसको कंट्रोल करने की बात की है। लॉन्जाइनस की तरफ अगर हम आते हैं तो ये इसलिए क्लासिक है कि इसने भी बैलेंस को एम्फसाइज किया है। ये एक क्लासिकल क्वालिटी है। लॉन्जाइनस के मुताबिक स्पर तो ज़रूरी है, घोड़े को भगाने के लिए स्पर ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ कर्ब भी ज़रूरी है। जो घोड़े की बागें हैं आप उसको कंट्रोल करते हैं। अगर सिर्फ आप चाबक मारें, स्पर से काम चलाएं तो घोड़ा तो इतना तेज दौड़ेगा कि घुड़सवार गिर जाएगा। तो वो कर्ब भी इस्तेमाल करता है, जो बागें हैं उसको खींचता है और यूं वो कंट्रोल रहता है। ये रिस्ट्रेंट कहलाता है। क्लासिकल राइटर्स के मुताबिक पैशंस इमेजिनेशंस इस पे रिस्ट्रेंट होना चाहिए। जैसे लॉन्जाइनस को हमने डिस्कस किया, वो नेचर की बात भी करता है कि नेचर आपको क्वालिटीज देता है पोइट्स को जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और वो हैं इमेजिनेशन और पैशन। लेकिन वो आर्ट की भी बात करता है, डिक्शन की बात करता है कि ये भी ज़रूरी हैं, दोनों ज़रूरी हैं सब्लिमिटी को पैदा करने के लिए। इनमें बैलेंस बड़ा अहम है और ये क्वालिटी एक क्लासिकल क्वालिटी है। दूसरा आर्गुमेंट इमिटेशन, इसके अलावा बैलेंस के अलावा वो इमिटेशन का है। इमिटेशन को न्यू क्लासिकल राइटर्स स्लेविश इमिटेशन समझते थे, आउटर फॉर्म की इमिटेशन ग्रीक राइटर्स की, जबकि लॉन्जाइनस के मुताबिक सोफोक्लिस और होमर की राइटिंग को सिर्फ इमिटेट नहीं करना चाहिए, उनके स्पिरिट को इमिटेट करना चाहिए और इम्बाइब करना चाहिए। लफ्ज इम्बाइब इसने यूज किया है, यानी उसकी रीडिंग आप इतनी कर लें कि उसकी मोहब्बत में आप जो लिखें वो ऑटोमेटिक इन लोगों की तरह हो। सोफोक्लिस ड्रामेटिस्ट के लिए मॉडल बने और होमर एपिक राइटर्स के लिए मॉडल बने। तो जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे उनका ख्याल सिर्फ आउटर फॉर्म की इमिटेशन का था, ना कि स्पिरिट का। तो ये डिफरेंस है क्लासेस, ये जो डिफरेंस है कि एक इमिटेशन स्लेविश समझता है और दूसरा इमिटेशन हम समझता है, ये दरअसल डिफरेंस है न्यू क्लासिकल और क्लासिकल का। ये डिफरेंस क्लासिकल और रोमांटिक का नहीं है, बल्कि ये क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का है। तो लॉन्जाइनस रोमांटिक भी है, ये क्लासिक भी है। होमर को एपिक राइटर का मॉडल समझा जाता है, सोफोक्लिस वगैरह को ड्रामेटिस्ट ड्रामास का मॉडल समझा जाता है। तो एटकिन के मुताबिक लॉन्जाइनस एक क्लासिक है, न्यू क्लासिक भी नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है। हमारी कंक्लूजन ये है कि इसने बेहतरीन चीज़ें क्लासिक्स की भी ली हैं और रोमांटिक्स की भी ली हैं और उनको कंबाइन किया है। और न सिर्फ ये कि ये क्लासिक है और रोमांटिक है, बल्कि ये एक 20th सेंचुरी राइटर भी है। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ये एक कैप्सुलाइज्ड फॉर्म में मैंने नेट से लिया है, ये मेरे नोट्स नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये क्लासिक है कि न्यू क्लासिक है, ये रोमांटिक है। फिर ये कि ये रोमांटिक कैसे है, जिसको हमने भी डिस्कस किया। फिर ये कि ये क्लासिक कैसे, उसको भी हमने डिस्कस किया। और फिर ये कि ये मॉडर्न क्रिटिक भी है। इसने कोई ऐसी सख्ती नहीं रखी कि मॉडर्निज्म को फॉलो नहीं किया, बल्कि ये मॉडर्निज्म और फ्यूचरिस्टिक भी है। कंक्लूजन हमारा ये है, इसमें भी यही है कि ये एक ओरिजिनल राइटर है। ये इसने रोमांटिक की भी अच्छी चीज़ें ली हैं और क्लासिक की भी ली हैं, और इसमें मॉडर्निज्म भी मौजूद है। तो आप इसको एज ए फुल क्वेश्चन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये आसान पड़ता है और समझ आती है। तो ये हमारे लॉन्जाइनस का आखिरी लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो लेक्चर्स हैं वो 1 फरवरी से लाइव लेंगे क्लासरूम में, और देखेंगे कि हमें टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग का या नहीं मिलता। तो अगर मिलेगा तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि और बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड गुड लक।